the speakers for the next session. I just want to talk a little bit about them. So last year we had CleftCon 22, which was in Delhi, and two people met there. They had never met earlier, and that is Ashim and Sakshi. And together they have started a support group for cleft warriors called Seerat. So before I bring them on stage, I would ask the event team to just show a beautiful prose, which has been written, I think, by Sakshi and shot by our Seerat cleft warriors. Can you please play Expressions? तू ये जान ले, ये मान ले कि तेरे होने पे मुझको नाज है। तू बोझ नहीं, एक मिसाल है। घूरती नजरों को तेरी तलाश है, पर तू डरना नहीं, तेरी आंखों में विश्वास है। तेरी सीरत इतनी पाक है कि सूरज भी रोशन हो जाए। जब तू मुस्कुराए तो चांद भी शर्मा जाए। तेरी हंसी में वो बात है जो अंधेरे में उजाला ले आए। तू कला का भंडार है, तेरे उड़ने के लिए ये खुला आसमां है। तेरी आवाज में हौसले की बुलंदी है। अब खोल दे पर, तेरी कहानी सुनने को ये दुनिया बेताब खड़ी है। Welcome, Sakshi and Ashim. Let's hear about Seerat. So yes, we met online in hybrid mode, me and Sakshi met then. And yesterday, last night was the first time we met in person. So that's the interesting story. I am Ashim, आपका host, आपका host और आपका दोस्त. एक महीने से मैं सोच रहा था मैं इसको बोलूँगा, but I messed it up. But anyway, I graduated from IIT Delhi a few years back. I've been a consultant, I've been trying new things, and this is one of the things that I'm trying to build now, and with Sakshi. So I'm Sakshi, as you all know. And yes, as Ashim told, हम कल पहली बार मिले, but we've been working on building Seerat since the last couple of months. And the journey began in the last Cleft Conference 2022, where we got to know each other, and one thing led to another, and we are here today, and we feel extremely grateful about it. आप लोगों ने पोएम सुनी? पोएम में आपको एक शब्द लिखा हुआ होगा, सीरत. किसी को सीरत का मतलब पता है? आप हाथ उठा के बोल सकते हैं. What is सीरत, मैम? हाँ? It's nice. Soul, yes, okay. Any other answer? So she said soul. Anything else? Sorry? Kubi. Okay. Interesting answers. Correct. Okay. Okay. So सीरत का मतलब होता है आपकी inner beauty, आपका inner character. So आज हमने इतनी सारी कहानियाँ सुनी, हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस किए, पंकज सर ने और मार्टिन सर ने हमें कुछ एक्सरसाइजेस करवाए, आँख बंद करवा के, राइट, और अफर्मेशंस के थ्रू, और हमने ये समझा कि हम जब सामने वाले को देखते हैं, परखते हैं या पसंद करते हैं, तो हम उनकी शक्ल से उन्हें पसंद नहीं करते. हमें प्यार है उनकी इनर ब्यूटी से, उनकी इनर खूबियों से, उनके कैरेक्टर से, उनके वैल्यूज से. तो बस वही मोटिव है. एज अ लेफ्ट पर्सन हम कैसे दिखते हैं या हम कैसे बात करते हैं, लोग हमें बहुत जज करते हैं उससे. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नज़रिया हम बदलें, हम बताएं कि सिर्फ बाहरी ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनर ब्यूटी उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. And we are trying to change the perception, and we are standing true to our name, Seerat. So what exactly are we doing? We are creating a community by cleft warriors. Both of us are cleft warriors, and we're trying to build that. It is built for cleft warriors and for everyone who is let's say, a parent or a friend or a family or a professional caregiver, right? Like a lot of people here.
But why is the community important? Since 9 or 10 a.m. this morning, a lot of us have been in this room. We are united by one common theme, let's say, that is cleft, right? Which makes a community. This is a community. The reason all of us have been able to speak to you or this has been a warm environment is because it's a community effect, right? And communities help each other. Every cleft warrior has a team around them which forms a community, right, for their support. And we want to build communities for people. So we're building multiple communities, 3 of them being one exclusively for cleft warriors. One which we call the Cleft Warriors community is exclusive to them. No one else is a part. It's me, Sakshi, and about currently 70 other people, right? Now these people have reached out to us through Instagram or someone's referral, or Dr. Karun has been gracious enough to help us with it. And these people are from different parts of India, right? And we've come together, we share our stories, our struggles, our pain points, but sometimes we also talk about other things. Then something that also Namita is building, a support group for parents. Because as Namita mentioned, it's very important for parents to connect with each other. So my father, he has an experience of raising a cleft warrior for 27 years now. But someone who's just had a cleft baby, right, let's say 3 months back, 6 months back, they have a lot of doubts. How can we support them? We give them a buddy or a partner, right? So that's the second community. The third community is of cleft professionals, people who are speech therapists or surgeons or dentists. Because a lot of people from different parts of the country, they message us and ask us, do you know a speech therapist in this area, or do you know a surgeon in this area? And frankly, we don't have that network right now, but we're trying to build that, right? Because all of the doctors here, you might know someone else, let's say in a small town in Assam, right? So that's the objective of that third group, that we want to build a community so that whenever we need help, we can seek out. Obviously, Smile Train is a big partner and they help us out all the time. So that's the objective with which we're building these 3 communities. And now Sakshi will tell you what we do on a, let's say, day-to-day or a week-to-week basis. And while she goes on to that, a lot of our cleft warriors are actually watching this live. A lot of us are actually here. So hi to everyone from both of us. Yes. Hi, Sanket. Hi, Kunjan. So, a few of our family members, we really believe it to be our family. They are here, and the other hundreds are watching it online. And there is constant chatter in our WhatsApp group. You are doing great, you performed so well, you spoke so well, and they're constantly supporting and pushing us. That's the kind of support that we are building. So it started off with the Cleft Warriors group. So we used to have every Sunday meetups online. We used to catch up for an hour or so and used to share stories. We are sharing our dull experiences, positive experiences. We are encouraging everyone to come forward and talk about anything or everything that matters to them. And फिर हमने धीरे धीरे activities करना start किया. People are sending voice notes in the groups. Feeling it becomes difficult as a cleft person to understand even you can sing. और having that thought कि यार ऐसी आवाज़ से तुमसे गाना चाहिए या नहीं. But this community has actually influenced and encouraged everyone to sing, no matter how you're sounding. And one by one, everybody started recording voice notes and sharing it in the group, and we found out that they have so much talent, but just because of this one thing, they have been keeping it hidden for years. इतना support मिलता है. So with online sessions, then we started doing offline catch-up. So he did one session in Delhi, offline catch-up. I did one in Mumbai. So you can see the pictures, right? This Rose, she's holding that guy. This was all Mumbai meetup. This was Delhi meetup. These are all online catch-ups. We also do master sessions of experts to create awareness and give knowledge and guidance regarding anything which is unknown to them and something that can really help everyone. This was MHI event that we did.
This is our parents group. Parents are sharing their child's pictures with beautiful smiles and creating that, support and cherishment for their children as well as others' children. So yeah, it makes us really, this story I would really like to emphasize on. This is Kishan Kumar. So he works at Adobe. And he was doing some interviews or something, and suddenly, he felt like उसके profile पे he should mention #CleftWarrior, so that anyone or everyone who reaches out to him or talks to him, it might create a curiosity of knowing what this means, right? Cleft Warrior, and really it happened. He just did it, essaying, and then everyone who was getting in touch with him was asking him what this means. And it created a chain of awareness. It created a chain of, asking questions and answers, and people were really amused to know about it. And उसके बाद में everyone got encouraged, and everyone started putting out #CleftWarrior in their Instagram bios, in their job networks, descriptions, and everywhere, in LinkedIn as well. So yeah, this is all the positive outlook that we are looking at. It's a first step, it's a small step, and I think it was much needed. We needed to provide some support group, because when all of us were growing up, we felt like we're the only ones here, and there's no one else who understands. But now there are a group of people who do understand, right? So what are we essentially trying to do? We are trying to make this community, yes, thank you. We're trying to make this community a little bigger. So let's say if you're a Cleft Warrior, or you're a family of a Cleft Warrior, or you're a professional, right? We want you to be a part of Seerat, because that is the only way it grows. People know people, that is how it grows. And to join it, you can message to us. Our numbers are here. You can scan this QR code. You can follow us on Instagram. The QR code is also visible on a Skyeng over there. So on the exit, there is a Skyeng. You can scan the QR code and you can say hi to us. And yeah, the only request is, if you find a Cleft Warrior or their family and you think they might need support, they will actually, and it never harms to have support. You can redirect them to Seerat, and we'll just make this family a little bigger step by step. So yeah, join us in our journey. From Surat to Seerat. Yeah. And now we just have one short video where we ask everyone what do they love about themselves. So the context behind this is just through Seerat, through organic referrals, Shubho became a part of our community, and he'll tell you about his story and what he does. And I'm going to leave that suspense to you, what he does. Hello everyone, I'm Shubho Bhattacharya from Assam, and this is my family, my mother and my grandmother. But unfortunately, we lost her 2 months earlier. But she used to support me a lot. And उसके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी कहानी। तो सुनिए। मैं जब छोटा था तो मैं जरूर बोलता था मुझे मॉडल बनना है, मुझे फैशन इंडस्ट्री में आना है। पर अभी क्या होता था ना, मैं जिनको ये बात बोलता था कुछ लोग होते थे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, हाँ तुम्हारा जो सपना है तुम पूरा करो। पर मैक्सिमम लोग थे जो मोटिवेट तो नहीं होते, डिमोटिवेटेड कर देते थे, और मजाक बनाना तो उनका काम ही था। और बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि मॉडल तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो। हाँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट एलिट है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था तभी। मेरे दोस्त ने तो मुझे ऐसा भी बोला मैं बंदर जैसा दिखता हूँ, मैं टाइकून जैसा दिखता हूँ। तो मेरा बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मैं ये सब सपना छोड़ दूँ, सपने तो सपने तक ही रहने दूँ। तो मैं उनका बात सुनता रहा, पर हार कभी नहीं माना। जब मेरा टाइम आया और मुझे मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का, मैं पीछे नहीं हटा और मैंने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना नाम दे दिया। एंड सरप्राइजिंगली मैं उस कॉन्टेस्ट का विनर बना। वो मेरा लोकल शो था, पर हाँ
मैंने मेरे किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को नहीं बताया था कि मैं शो कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी और नानी को ही मालूम था एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। मैं मम्मी और नानी के साथ गया शो करने, मैं विनर बना, ट्रॉफी लेके मेरे घर पे आया एंड उसके बाद के दिन लाइक आई वाज सरप्राइज। सबको मालूम चल गया कि मैं शो का विनर बना, लाइक पेपर्स में आ गया, न्यूज़ में ले लिया एंड मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुआ। मैंने तो ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए शो ज्वाइन किया था, पर हाँ ये तब प्रोफेशन बन गया मालूम ही नहीं चला। एंड मैं बस यही बोलना चाहता हूँ अपने क्लैप दोस्तों से, सभी हार मत मानो एंड लोगों के बारे में आकर अपने सपनों को टूटने मत देना। मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और मैंने किया भी। आज मुझे शो पे बुलाया जाता है ऐसे जज, ऐसे शो टॉपर, और मुझे मॉडलिंग सिखाने के लिए भी बुलाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब मेरे घर पे मेरे टेबल में एक भी ट्रॉफी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं तो हमेशा यही सोचता था लोग क्या बोलेंगे, और ये सोचते सोचते मेरा पूरा बचपन बीत गया। क्लास 10 के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोचने में। एंड उसके बाद मैंने अपना सपना जीना शुरू कर दिया और मैंने शोज में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। मैं नर्वस शुभ से कॉन्फिडेंस शुभ बन गया और शुरू हुआ मेरे मॉडलिंग का नया जर्नी। फिर मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आना भी चालू हो गया था। मुझे ब्रांड शूज़ के लिए भी बुलाया गया, मुझे म्यूजिक वीडियो का भी ऑफर आया, और सरप्राइज तो तब हुआ मैं जब मुझे आसाम के बाहर भी ऐसे शोज पर बुलाया गया था। मैंने शोज में ज़ूम भी करवाया है, मैंने बहुत सारा काम किया और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी और मेरी नानी ने। और जो लोगों ने मुझे बुली किया था वो लोग बन गए थे मेरे फ्रेंड्स, और उसी में बन गया फर्स्ट लेफ्ट मॉडल। हाँ, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी अ लेफ्ट। मुझे कभी ऐसा लगता है अगर मैं लेफ्ट पे नहीं होता तो शायद मैं फर्स्ट लेफ्ट मॉडल नहीं बन पाता। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ही जैसे और भी लेफ्ट लिप और लेफ्ट मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं सब आगे बढ़े और अपना ड्रीम पूरा करें, और लोगों के बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अगर आप लोगों का बात सुनने बैठ जाओगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ में, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरे लेफ्ट दोस्तों से, प्लीज़ अपना सपना पूरा कीजिए। एंड वी आर नॉर्मल, हम नॉर्मल है। जो लोग हमको नॉर्मल नहीं समझते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, उनका मेंटली नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो लोग हमको भी नॉर्मल नहीं समझते हैं। विद दैट, थैंक यू।